old gold. पियो एवरग्रीन, रहो एवरग्रीन, रहो एवरग्रीन। मेरी मधु कुंजी मेरे भगवान के लिए सही है। एवरेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट। आथर्नियो बेसी भावनी। नमस्कार, भारत 10 को स्वागत करुछि मु प्रवीण। प्रथम हेडलाइंस। This headline brought to you by Laljan Jewelers, trusted brand since 1948. वेनेजुएला उपरे अमेरिकार प्रचंड आक्रमण। मिडनाइट एयर स्ट्राइक रे थरिला कारकस सिटी। देश छाड़ी पलाउथुआ बेले राष्ट्रपति को कला कब्जा। ब्रिलियंट ऑपरेशन कहले डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला रे इमरजेंसी। विदेशी आक्रमण कहले सेना मुख्य। वेनेजुएला रे सद्दाम हुसैन गिरफ घटनार पुनरावृत्ति। मध्यरात्रि रे अमेरिकार ऑपरेशन लिबर्टी। मिराफ्लोरेस पैलेस रे डेल्टा फोर्स अभियान। बंकर भितरु राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं पत्नी सिलिया फ्लोरेस को टाणी आनिला सेना। गिरफ परे वेनेजुएला सीमा बाहर को नेला अमेरिका। वेनेजुएला रे राजनीतिक संकट। देश में जरूरी स्थिति घोषणा। कहीं ट्रंप को टार्गेट रे थिले निकोलस मादुरो। अपराधी भावे मादुरो को घोषणा करिथिला यूएस लॉ डिपार्टमेंट। गिरफ पाई रखिथिला $50 मिलियन पुरस्कार राशि। रूस एवं चीन सहित संपर्क वृद्धि नहीं थिला क्षुब्ध। 90 दशकरू तेजी थिला दुई देश मध्य तिक्तता। वर्षर प्रथम सुपरमून दृश्यमान। उज्जवल एवं विशाल आकार में देखागला जन्म। 30% अधिक बृहत एवं चमत्कार। देशर विभिन्न स्थान में विरल एवं महाजागतिक दृश्य देखि मजा उठाइले लोके। श्रीमंदिर चूड़ारे उज्जवल जन्म सृष्टि कला अनन्य दृश्य। बांग्लादेश रे पुणी जड़े हिंदू युवक गला जीवन। प्रबल माड़ पर निया लगाई देथिबा खोकन दास चिकित्साधीन अवस्था मृत। 3 दिन धरी जीवन सहित करुथिले संग्राम। सेपटे केकेआर रिलीज हला बांग्ला क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान रिलीज हेले। बीसीसीआई निर्देश पर फ्रांचाइजीर बड़ निष्पत्ति। एवं न्यूजीलैंड विपक्ष दिनिका सीरीज पर भारतीय दल घोषणा। उपअधिनायक भाव दल को फेरिले श्रेयस आयर। फिटनेस क्लीयरेंस को अपेक्षा सिराज सामिल। पंत को सुजोग। वर्कलोड पर हार्दिक एवं बुमराह को रेस्ट। पुणी निराश हेले सामी। गिल को कांधरे रहिबो बड़ दायित्व। संपूर्ण खबर को आसिबा। अमेरिका सेना कब्जारे वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। एक चलचित्रर कहानी भली नाटकीय तांको गिरफ्तारी। आज भोर समय आरंभ होइतिला ऑपरेशन करिथिले अमेरिकार डेल्टा फोर्स। वेनेजुएला राजधानी कारकास सहर सोइतिला बेले अमेरिकार अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ युद्ध विमान एवं ड्रोन वेनेजुएलार आकाश सीमा प्रवेश करथिले। राडार को चकमा दे प्रथमे वेनेजुएलार एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करदेले। बोमा माड़े थरी उठीथिला वेनेजुएला राजधानी कारकास। एयरबेस उपरे मिसाइल पड़ीथिला। घन घन विस्फोरण होइथिला। सेना आक्रमण जारी रहिथिबा बेले अमेरिकार स्वतंत्र कमांडो बाहिनी हेलिकॉप्टर जोगे सीधा सड़क राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस परिसर में ओह्लाइथिले। मादुरो को व्यक्तिगत सुरक्षा बाहिनी एवं अमेरिकीय कमांडों मध्य किछि समय प्रबल गुली विनिमय होइथिला। मादुरो एवं तांको पत्नी सिलिया फ्लोरेस एक बंकर भितर लुचिथिबा बेले सेमानंकु काबू करा जायथिला। कब्जा करिबा परे सेमानंकु तुरंत एक सामरिक विमान जोगे वेनेजुएलार सीमा बाहर को नियागला। ट्रंप को घोषणा अनुसार अमेरिकार लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी माने सेठारे उपस्थित थिले। कारण मादुरोंको नारे पूर्वरु गिरफ परवाना थिला। सबुठु बड़ कथा हेउछि अमेरिका को वेनेजुएलार सेनार किछि विद्रोही अधिकारी साहाय्य करिथिबा कुहा जाउछि। सेमाने ही मादुरोंको ठिकाना एवं प्रासाद भितर गुप्त रास्ता विषय अवगत करथिले। तेबे ट्रंप ए पर्यंत स्पष्ट करि नाहांती जे मादुरो को केउठी रखा जायछि, किंतु अनुमान करा जाउछि
तांकु ग्वांटानामोवे किंबा अमेरिकार कौनसी हाई सिक्यूरिटी जेल को निया जायछि। तांको खूब शीघ्र अमेरिकार एक कोर्ट रे हाजर करा जाई तांको विरोध रे थिबा नार्को टेररिज्म मामलार विचार मध्य करा जिवो। वेनेजुएला रे भयंकर स्थिति। अमेरिका कब्जारे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं तांको पत्नी क्षमतारू हटिबा परे वेनेजुएला रे भांगिजी सरकार। अमेरिकार आक्रमण को कड़ा निंदा करिसेंती विश्वर विभिन्न राष्ट्र। रूस चीन समेत बहु राष्ट्र एथिरे मिलित जातिसंघर हस्तक्षेप दाबी करिसेंती। ट्रम्प निज राष्ट्रपति कार्यकालरू ही निकोलस मादुरो को टार्गेट करि आसिछंती। पूर्वरु मादुरो को गिरफ करने को पुरस्कार राशि $50 मिलियन को वृद्धि करिथिला ट्रम्प प्रशासन। तेबे अमेरिका एवं वेनेजुएला मध्यरे विवाद नुआ नुही। 1990 दशकरू लागि रहितबा तिक्तता एबे युद्धर रूप नेछि। विश्वरे चांचल्य लाटिन अमेरिकीय राष्ट्र वेनेजुएला उपरे अमेरिकार राति अधिया आक्रमण। मध्य राति रे काराकस सिटी उपरे प्रचंड एयर स्ट्राइक। आक्रमण परे वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और तांको पत्नी डेल्टा फोर्स कब्जारे थिबा कहिसंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। सेपटे मादुरो एवं तांको पत्नी को पत्ता नथिबा कहिसंती वेनेजुएला उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगस। वेनेजुएला जातिसंघ सुरक्षा परिषदर जरूरी बैठक डाकिबा सहित मादुरो दंपति जीवनर प्रमाण मागिछंती। रूस चीन यूरोपीय संघ इटाली समेत बहु राष्ट्र तुरंत एथिरे जातिसंघर हस्तक्षेप दाबी करिछंती। The conflict there is about something that President Trump has outlined in many ways and across the world. It's about minerals, it's about oil. People do not realize that Venezuela has the largest reserves of oil in the world, much bigger than Saudi Arabia. Trump administration and President Trump wants control over Venezuela. Effort after effort, in deal after deal, he has put this at the core of his interests. So there is a certain logic. कहीं वेनेजुएला उपरे आक्रमण कला अमेरिका। ट्रम्प निजर द्वितीय पाली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को टार्गेट करथिले। बेआईन निशा कारोबार और अमेरिका को चालान प्रतिवाद रे सेप्टेम्बर मासरे ट्रम्प आरंभ करथिले ऑपरेशन मादुरो डोरबेल। वेनेजुएला को घेरी सामरिक अभियान आरंभ करथिले। मादुरो को गिरफ्त करने को पुरस्कार राशि $50 मिलियन को वृद्धि करथिला ट्रम्प प्रशासन। मादुरो को राष्ट्रपति भावे नुहे बरम जड़े अपराधी भाव में घोषणा करथिला अमेरिका। मादुरो एक बड़ धरणर ड्रग्स कारोबार चलाउथुबा अमेरिका आईन विभाग अभियोग करथिला। वेनेजुएला रे मादुरो को शासन विरोध में हेउथुबा आंदोलन को सेना जरिया रे दमन करा जाउथुला। पूर्वरु एने डोनाल्ड ट्रम्प चेतावनी देइथिले। आजरो एयर स्ट्राइक को रेस्क्यू ऑपरेशन बोली कहिछि अमेरिका। 2024 निर्वाचन परे मादुरो जोर जबरदस्त क्षमता दखल करिथिबा अमेरिका अभियोग करथिला। विरोधी दलर नेता शासन क्षमता रहिबाकू अमेरिका चाहुथुला। मादुरो को हटाई देश में गणतंत्र प्रतिष्ठा करने अमेरिकार लक्ष्य रहिथिला। अमेरिका निकटरे थिबा वेनेजुएला रे रूस एवं चीन निजर प्रभाव बढ़ाउथुले। निज पड़ोसी अंचल रे रूसर सामरिक उपस्थिति अमेरिका पई असह्य थिला। America can do anything they want. Trump can do anything they want. They have intention or no intention, aim or principle, objective, it doesn't matter. It just feel like them because they don't like Maduro. They don't like the leftist government. And so now that Machado lady, she's pro-American. She says, we'll hand over the oil field to you. And so please remove this guy. We are on your side. So he's willing to do it. अमेरिका एवं वेनेजुएला तिक्तता अनेक वर्षर 1999 रु 2013 ह्यूगो चावेज शासन बेलू तिक्तता उग्र रूप नैथिला। राष्ट्रपति चावेज अमेरिका विरोधी नीति अपनाइथिले। वेनेजुएलार तैल संपत्तिर सरकारीकरण द्वारा अमेरिका कंपनी गुड़िक क्षति सहिले। एहिठारु ही संपर्क खराब हेबा आरंभ होला। चावेज को देहांत परे निकोलस मादुरो शासन गादी रे बसिले। अमेरिका मादुरो को एकछत्रवादी शासक भाव में घोषणा करथिला। ट्रम्प को प्रथम शासन बेले ट्रम्प वेनेजुएला उपरे कठोर अर्थनैतिक कटकणा लगाइले। अमेरिका विरोधी नेता जुआन ग्वेडो को समर्थन करथिला। 2020 रे अमेरिकार आईन विभाग मादुरो को उपरे ड्रग टेरोरिज्म अभियोग आनी $50 मिलियन पुरस्कार घोषणा कला। 2024 निर्वाचन रे मादुरो विजय को अमेरिका एवं अन्य देश माने जालियाती बोली कहिथिले।
वेनेजुएला रे व्यापक विरोध प्रदर्शन हैला। शांतिपूर्ण आंदोलनकारी उपरे आक्रमण कले अमेरिका रेस्क्यू आरंभ करिबो बोली चेतावनी देइथिला अमेरिका। आज मादुरो को निज कब्जा को नेबा परे अमेरिका सेना उपस्थित रहिछि। एहाकु रूस और चीन तीव्र विरोध करुछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी। भारत देखिला महाजागतिक दृश्य। महाकाश रे संगठित हैला सुपरमून। दृश्यमान होइछि नवा वर्षर प्रथम पूर्ण चंद्र। आज चंद्र निज कक्ष पथरे पृथ्वीर सबुठु निकटतर होइछि। निज आकारु 14% बड़ एवं 30% उज्जवल देखा जाउछि चंद्र। जयपुर, कोलकाता, लखनऊ भली प्रमुख सहर रे देखा जाइछि सुपर मून बा उल्फ मून। सेपटे श्रीक्षेत्र आकाश रे भी झटकुला सुपर मून। नीलचक्र सहित पूर्ण चंद्र अपरूप दृश्य लोकों को विमोहित करिथिला। चंद्र पृथ्वीर निकटतर एवं पूर्ण अवस्था थिबा जोगु एभली घटना घटी थाए। प्राचीन काल रे जानुआरी रे पड़ुवा पूर्णमी रे गधिया माने बहुत बोबाउथिले, तेणु याकू उल्फ मून बोली भी कहा जाए। पूर्णिमार सठिक समय सकाळ 10टा रे थिबा बेले सूर्यास्त परे आकाश रे देखिबाकू मिलिछि सुपर मून। वैज्ञानिक भाषा रे याकू मून इल्यूजन कहा जाए, जोठी चंद्र अपेक्षाकृत अधिक बड़ देखा जाए। तेबे सुपर मून देखिबा पई बायनाकुलार किंबा टेलीस्कोप रो दरकार पड़े नाही, आवश्यकता पड़े नाही। खाली आखिरे याकू देखि हबो। ए वर्ष शेष आड़कू आउ 2 थर सुपर मून देखा जिवो। आसंदा नवेम्बर 24 और डिसेम्बर 24 रे सुपर मून देखिबाकू मिलिबो। शेष थर पई 1912 मसिहा रे सुपर मून दृश्यमान होइथिला। डॉक्टर शुभेन्दु पट्टनायक महाकाश विज्ञानी आम सहित जोड़ी होती। अधिक सूचना अधिक आलोचना पाई डॉक्टर पट्टनायक आपन को स्वागत करी। ये सुपरमून मुख्य विशेषत्व कौन? देखो सुपरमून हूँ गोटे शब्द जोटा कि जने ज्योतिष 1979 मसीह प्रचलन करते शब्दटी कहवा कथा है जितेबाला चंद्रटी आम पृथ्वी निकटरे थाए पूर्णमी पड़ी थाए जन्नटी बड़ देखा जाए से सुपरमून नामकरण करते। आम समस्ते जानी कि पृथ्वी चारिपट चंद्र गोटे अंडाकृति पथर बुलूची गोटे मसरे थे बुली आसूची। तेणु आम पूर्णमी पूर्णमी प्राय 29 दिन हो बुलवा फल कौन हो चंद्र प्रत्येक मसरे आम पृथ्वी निकटतर होता है दूर को जाए। निकटतर हेले 3,55,000 किलोमीटर जाए आसी जाए। तो से सुपरमून डेफिनेशन अनुसार यदि चंद्र 365 किलोमीटर 3,65,000 किलोमीटर पाखरे थिबा अवस्था गोटे पूर्णमी पड़ी थाए चंद्रटी आमको अपेक्षाकृत बड़ देखा जाए। प्राय 14% बड़ और 30% उज्जवल देखा जाए। तो से अवस्था आम तार नामकरण सुपरमून। अनेक स्तर रे कहा जाए जे सुपरमून फल रे समुद्र रे साधारण अपेक्षा टिके अधिक उच्च ज्वार आसी थाए। एक कथा सत कि? एटा निश्चय सत एथिपय जे सुपरमून जेतेबेले होता है आम चंद्र पृथ्वी पाखापाखि थाए से समय सूर्य ठीक विपरीत दिगरे थाए चंद्रर। तेणु आमर जुआर टिके वृद्धि घटी थाए किंतु वृद्धि अर्थ नुहे जे 5 फुट 3 फुट अधिका बढ़ीजिव। सेटा होची 2 ରୁ 6 सेंटीमीटर मात्र अधिक होता है माने खूब कम परिमाणर। कारण चंद्रर दूरता सबुबले पाखापाखि पृथ्वी समान हाराहारी देखिले 3,80,000 किलोमीटर थाए। तेणु सुपरमून दिन जे बहुत अधिक जुआर हम सेटा धारणा भूल किछि परिमाण बढ़ी थाए जोटा कि नेग्लिजिबल बा बहुत कम बोली आमे कहि परिबा जोटा होछि पाखापाखि 2 ରୁ 6 सेंटीमीटर अधिक हुए साधारण गोटे पूर्णमी दिन अपेक्षा। डॉक्टर पट्टनायक अनेक लोकंकर धारणा थाए चंद्र ग्रहण बेले सामाजिक जीवन रे लोक मानक ऊपर यार अनेक अंश रे प्रभाव पड़े। अनेक याकू ग्रहण करती, अनेक लोक स्वीकार करती नहीं। सुपरमून एमती किछि अछि कि दिग जो आम कहीपर यार कौन विपद अच्छी कौन पार्श्व प्रतिक्रिया लोकों जीवन रे बा साधारण जीवन यात्रा रे पड़ियो बोली? हाँ देखो पूर्व काल लोक मैंने विश्वास करुले चंद्र होती गोटे देवता से पूजा करुले भावुले चंद्रर जो आकार बदलुची से आम उपर किसी ना किसी प्रभाव पड़ुची। किंतु एबे आम स्पष्ट भाव में जानी सारे चंद्र गोटे निर्जीव पिंड चंद्र पृष्ठ आम मनीष जाई पाद दे सारे चंद्रर प्रत्येक गतिविधि आम भल भाव में जानी सारे। तेणु से सब जानिला परे आउ वर्तमान चंद्र जो आम उपर प्रभाव पकाउची से विषय आलोचना करिया मध्य मु भाबुची ठीक हेबनी। कारण चंद्र
ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ରହିଛି, ଆଜି ରହିଛି, କାଲି ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ओके संपूर्ण आलोकित बिल्कुल डॉक्टर पट्टनायक आपको धन्यवाद अधिक आलोचना पाई डॉक्टर शुभेन्दु पट्टनायक महाकाश विज्ञानी आम सहित जोड़ी होते एक बड़ खबर सामना को आसिला वेनेजुएला घटनाक्रम को लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प किछि कहउछंती आसंतु सुनिबा Liberty and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that probably won't have to do. This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish, will make the people of Venezuela rich, independent, and safe. And it will also make the many, many people from Venezuela that are living in the United States extremely happy. They suffered. They suffered. So much was taken from them. They're not going to suffer anymore. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many, many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship they'll be heading to, ultimately, New York, and then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. But we have people where the overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law. And I've seen it. I've seen what we have. It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. And you all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs that inflicted untold suffering and human destruction all over the country, all over, in particular, the United States, Maduro sent savage and murderous gangs, including the bloodthirsty prison gang Tren de Aragua,
to terrorize American communities nationwide, and he did indeed. They were in Colorado. They took over apartment complexes. They cut the fingers off people if they called police. They were brutal, but they're not so brutal now. And I just have to congratulate our military, Pete and everybody, and our National Guard, because the job that they've done, whether it's in Washington, D.C., where we have a totally safe city, where it was one of the most unsafe cities anywhere in the world, frankly, and now we have no crime in Washington, D.C. We haven't had a killing. We had the terrorist attack a few weeks ago, a little bit of a different kind of a threat, but we haven't had a killing in a long period of time, 6-7 months. We used to have two, on average, 2 a week in Washington, our capital. We don't have that anymore. The restaurants are opening. Everyone's happy. They're going, they're walking their daughters, they're walking their children, their wives. They walk to restaurants. Restaurants are opening all over Washington, D.C. So I want to thank the National Guard. I want to thank our military. And I want to thank law enforcement. Been amazing. And they should do it with more cities. We're doing it, as you know, and we're doing it in Memphis, Tennessee right now, and crime is down. We've just sort of started a few weeks ago, but crime is down now 77%. And the governor of Louisiana called, great person, and he wanted us to help him, as you know, in a certain very nice part of Louisiana. And we have done that. And it was a rough section, and we have crime down. I understand it's down to almost nothing already after 2.5 weeks. New Orleans, it's down to almost nothing, and we've only been there for 2.5 weeks. Can't imagine why governors wouldn't want us to help. We also helped, as you know, in Chicago, and crime went down a little bit there. We did a very small help because we had no working ability with the governor. The governor was a disaster, and the mayor was a disaster. But it knocked down crime. But we're pulling out of there. When they need us, we'll know. You'll know. You'll be writing about it. And likewise, Los Angeles, where we saved Los Angeles early on, where the head of the police department made a statement that if the federal government didn't come in, we would have lost Los Angeles. That's long after the fires. That's when they had the riots in Los Angeles. We did a great job. Got no credit for it whatsoever, but that's okay. It doesn't matter. We don't need the credit. But we'll be pulling out when they need us. They'll call, or we'll go back if we have to. We'll go back. But we did a great job in various cities. But the place that we're very proud of is Washington, D.C., because it's our nation's capital. We took it from being a crime-ridden mess to being one of the safest cities in the country. But the gangs that they sent raped, tortured, and murdered American women and children. They were in all of the cities I mentioned, Tren de Aragua. And they were sent by Maduro to terrorize our people, and now Maduro will never again be able to threaten an American citizen or anybody from Venezuela. There will no longer be threats. For years I've highlighted the stories of those innocent Americans whose lives were so heartlessly robbed by this Venezuelan terrorist organization. Really one of the worst. One of the worst, they say the worst. Americans like 12-year-old Jocelyn Nungari from Houston. Beautiful Jocelyn Nungari, what happened to her? They, as you know, they kidnapped, assaulted, and murdered by Tren de Aragua animals. They murdered Jocelyn and left her dead under the bridge. There was a bridge that will never be the same to so many people after seeing what happened. As I've said many times, the Maduro regime emptied out their prisons, sent their worst and most violent monsters into the United States to steal American lives. And they came from mental institutions and insane asylums. They came from prisons and jails. The reason I say both, they sound similar. Actually, prisons a little bit more hostile, a little bit tougher. A mental institution isn't as tough as an insane asylum, but we got them both. They sent from their mental institutions. They sent from their jails, prisons.
They were drug dealers. They were drug kingpins. They sent everybody bad into the United States. But no longer. And we have now a border where nobody gets through. In addition, Venezuela unilaterally seized and stole American oil, American assets, and American platforms, costing us billions and billions of dollars. They did this a while ago, but we never had a president that did anything about it. They took all of our property. It was our property. We built it. And we never had a president that decided to do anything about it. Instead, they fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela oil industry with American talent, drive, and skill, and the socialist regime stole it from us during those previous administrations, and they stole it through force. This constituted one of the largest thefts of American property in the history of our country. Considered the largest theft of property in the history of our country. Massive oil infrastructure was taken like we were babies, so we didn't do anything about it. I would have done something about it. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into and out of our own hemisphere. That's what they did. Furthermore, under the now deposed dictator Maduro, Venezuela was increasingly hosting foreign adversaries in our region and acquiring menacing offensive weapons that could threaten U.S. interests and lives. And they used those weapons last night. Potentially in league with the cartels operating along our border. All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy, dating back more than 2 centuries, and not anymore. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the केमिति कटिबो आजिर केउ समय यात्रा कले पाइबे शुभ फल अशुभ ग्रहर चलन पाई आपण चिंतित कि केउ ग्रहर की प्रभाव रही आपणक आपणक गृह रे अछि कि किछि वास्तु दोष कोन करिवे प्रतिकार ए सबरो समाधान पाई देखंतु आम कार्यक्रम राशिफल प्रत्येक दिन सकाळ 7:30 free. America is a safer nation this morning. It's a prouder nation this morning because it didn't allow this horrible person and this country that was doing very bad things to us. It didn't allow it to happen. And the Western Hemisphere is right now a much safer place to be. So I want to thank everybody for being here. I want to thank General Raisin Kane. He's a fantastic man. I've worked with a lot of generals. I worked with some I didn't like. I worked with some I didn't respect. I worked with some that just weren't good. But this guy is fantastic. I watched last night one of the most precise attacks on sovereignty. I mean, it was an attack for justice. And I'm very proud of him, and I'm very proud of our Secretary of War, Pete Hegseth, who I'm going to ask to say a few words. Thank you very much. Well, thank you, Mr. President. Finally, a commander-in-chief the world respects and the American people deserve. And as the president said, words can barely capture the bravery and the power and the precision of this historic operation. A massive joint military and law enforcement raid flawlessly executed by the greatest Americans our country has to offer. American warriors are second to none, the best in the world and the best of our country. What all of us witnessed last night was sheer guts and grit, gallantry, and glory of the American warrior. I'm simply humbled by such men. And I tip my hat to our chairman, Dan Raisin Kane, and all those Americans who stood watch last night. Our warriors are the elite of America, and again, President Trump has
you're back. No other country on planet Earth, and it's not even close, could pull this kind of operation off. And no other president has ever shown this kind of leadership, courage, and resolve, the most powerful combination the world has ever seen. As the president said, our adversaries remain on notice. America can project our will anywhere, anytime. The coordination, the stealth, the lethality, the precision, the very long arm of American justice, all on full display in the middle of the night. Nicolas Maduro had his chance, just like Iran had their chance, until they didn't and until he didn't. He effed around and he found out. President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. This is about the safety, security, freedom, and prosperity of the American people. This is America first. This is peace through strength. And the United States War Department is proud to help deliver it. Welcome to 2026. And under President Trump, America is back. I'd like to welcome now our chairman, Chairman Raisin Cain, to give a few more details about the operation. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President, and good morning. Last night, on the order of the President of the United States and in support of a request from the Department of Justice, as the President said, the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. This operation, known as Operation Absolute Resolve, was discreet, precise, and conducted during the darkest hours of January 2nd and was the culmination of months of planning and rehearsal, an operation that, frankly, only the United States military could undertake. What I'd like to do this morning is talk to you through some of the preparation and the details without compromising any of our tactics, techniques, and procedures. There is always a chance that we'll be tasked to do this type of mission again. Our interagency work began months ago and built on decades of experience of integrating complex air, ground, space, and maritime operations. While the past 2 decades have honed the skills of our special operations forces, this particular mission required every component of our joint force, with soldiers, sailors, airmen, Marines, and Guardians working in unison with our intelligence agency partners and law enforcement teammates in an unprecedented operation. We leveraged our unmatched intelligence capabilities and our years of experience in hunting terrorists, and we could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, including the CIA, NSA, and NGA. We watched, we waited, we prepared, we remained patient and professional. This mission was meticulously planned, drawing lessons from decades of missions over the last many years, many missions over these last many years. This was an audacious operation that only the United States could do. It required the utmost of precision and integration within our joint force. And the word integration does not explain the sheer complexity of such a mission. An extraction so precise it involved more than 150 aircraft launching across the Western Hemisphere in close coordination, all coming together in time and place to layer effects for a single purpose, to get an interdiction force into downtown Caracas while maintaining the element of tactical surprise. Failure of one component of this well-oiled machine would have endangered the entire mission, and failure is never an option for America.
हिंदुओं पई असुरक्षित बांग्लादेश गला आउ जड़े निरीह हिंदुओं जीवन नुआ वर्ष संघबद्ध आक्रमण पर आखि बुझी खोकन चंद्र दास गत किछि दिन भितर 4 जण हिंदुओं जीवन जीवा पर हिंदुओं सुरक्षा नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। एबडे संख्यालघु हिंदुओं उपर आक्रमण पर आईपीएल बांग्ला खेलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को हटाइबा को निर्देश देछि बीसीसीआई। दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, भजेंद्र विश्वास एबे खोकन चंद्र दास बांग्लादेश रे आखि बुझिले आउ जणे हिंदू। गत 15 दिन रे 4 हिंदू को हत्या। नुआ वर्ष रे खोकन को संघबद्ध आक्रमण करथिले दुर्बृत्त। छुरी भूसिबा परे पेट्रोल ढाली निया लगाई देथिले। जीवन बंचाइबाकू जाई निकटरे थिबा एक पोखरी को डेई पड़िथिले खोकन। 2 दिन धरी जीवन सहित संघर्ष करिबा परे आखि बुझिछंती। बांग्लादेश रे थिबा हिंदू को खोजी खोजी धमक चमक देउछंती हिंदू विरोधी। हिंदू मानक ऊपर चलिथिबा अत्याचार कमिबार ना धरुनी। शुक्रवार गाजीपुर रे चोरी संदेह रे जणे भिखारी को खुंटरे बांधी पिटिथिले। सुमन नामक ए पीड़ितों अवस्था गुरुतर रही। डिसेम्बर 18 तारिख रे हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को विभत्स हत्या करा जायथिला। 7 दिन पर 25 तारिख रे अमृत मंडल हत्यार शिकार होइथिले। 29 तारिख रे भजेंद्र विश्वास को तांकर जणे सहकर्मी गुली करी हत्या करिथिले। बांग्लादेश रे संख्यालघु हिंदुओं उपर आक्रमण पर एक्शन। आईपीएल बांग्ला खेलाड़ी को हटाइबा को निर्देश। बांग्लादेश द्रुत बोलर मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर टीम रु विदा करने को कोलकाता नाइट राइडर्स को बीसीसीआई निर्देश देछि। बांग्ला खेलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर किनिबा परे विवाद को आसीथिला शाहरुख का फ्रांचाइजी। देशव्यापी तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइथिला। बांग्ला खेलाड़ी आसी भारत में खेलिबा को नापसंद करथिले। गत मासरे होइतिबा आईपीएल निलाम रे केकेआर मुस्ताफिजुर रहमान को 9 कोटी 20 लाख टंका रे किनिथिला। से आईपीएल इतिहास रे सबुठु दामी बांग्लादेशी खेलाड़ी पालटिथिले। तांको बदल रे टीम रे आउ काहाकू नेबा पई चाहिले अनुमति दिया जिवो बोली बीसीसीआई संपादक कहिसंती। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बिल्कुल गलत हो रहा है तो डेफिनेटली रिएक्शन तो ऐसे ही आएगा। बोर्ड ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, बट लेकिन जो लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए कहाँ पे भी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के लोग को मारना थोड़ी तो नहीं करना चाहिए। और बांग्लादेश में हमारा बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। जो डिसीजन होता है बोर्ड का, जो डिसीजन है मेरे ख्याल में सब लोग के साथ बैठ के और अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से डिस्कस करके ही ये डिसीजन लिया होगा। संख्यालघु सुरक्षा दाबी रे बांग्लादेश रे आंदोलन जारी रही। सेपटे संख्यालघु सुरक्षा पाई बांग्लादेश सरकार प्रतिश्रुति देउथबा बेले चरमपंथी मुस्लिम मौलवादी गोष्ठी भारत को विरोध जारी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी। ब्रह्मपुर रे फुटबॉल मैच शेष पर हो हल्ला। ब्रह्मपुर पतित पावन क्लब को हराई भंजनगर पाना ब्रदर्स क्लब पेनाल्टी गोल 5-4 रे विजयी हेबा परे परे दुई दलर समर्थकों मध्य हो हल्ला ठेलापेला। ब्रह्मपुर महात्मा गांधी स्टाडियम रे ब्रह्मपुर विधायक के अनिल कुमार द्वारा 3 दिनिया अटल बिहारी वाजपेयी स्मारकी फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनाल मैच रो खेल समाप्त एवं पुरस्कार वितरण पर एभली परिस्थिति उपजी थिला। परे परे सबु समाधान होइथिला। आम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक जोड़ी होइछन्ती आम सहित। प्रकाश, एभली परिस्थिति काहेकि उपजी थिला? हाँ देखो प्रवीण एमती अनेक समय एमती घटना घटियार नजर रही जितेबले कि जड़े टी एक्साइटेड हो जाती विशेषकर गोटे समर्थक कथा आम कह जेहेतु ब्रह्मपुर पतितपावन क्लब पराजय वरण कला एणु से जो समर्थक मैंने थे से निजक नियंत्रण रखिपार नमती गैलेरी जड़े अचानक तलू को आसी जो क्लब द्वारा से पराजय वरण करते भंजनगर पाना ब्रदर्स क्लब जड़े खेला को से आक्रमण करने को उद्यम करते जड़े
पतितपान क्लब रो जने समर्थक तो सी ताको आक्रमण करिया पूर्वरु अन्य माने सेठी हस्तक्षेप करथिले जो माने आयोजन करिसंती आयोजक कमिटीर जो सदस्य माने तापरे उभय दलक मध्य हो हल्ला पाटितुंड होइतिला ठेला पेला मध्य होइतिला किंतु एमिति किछि परिस्थिति सृष्टि हो नथिला जा फल कि अति कम समय भितर सब किछि समाधान होइतिला पुरस्कार वितरण उत्सव मध्य शांति श्रृंखला सहित अनुष्ठित होइतिला तो एठी 3 दिन व्यापी ये टूर्नामेंट अनुष्ठित होइतिला फुटबॉल पूर्व जमती आम देखी से स्टेडियम ही क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होता बाहर राज्य मध्य आसीथिले जो अटल बिहारी वाजपेयी स्मारकी क्रिकेट टूर्नामेंट परवर्ती समय फुटबॉल टूर्नामेंट ये गोटे सब महलर क्रीड़ा प्रेमी माने कहतु कि खेलाड़ी माने कहतु या निहाती रूपे गोटे स्वागत करुँच जे ए प्रकार टूर्नामेंट गोटे पर गोटे होची किंतु ये जो गोटे केवल उत्तेजित होइथिले ना कथा मारपीट पर्यंत जाइथिला नहीं नहीं मारपीट पर्यंत कथा जाइनी ठेला पेला पर्यंत कथा जाइथिला हो हल्ला टिके बेसी जोर हे गेला जेहेतु गोटे गोटे देखंतु गोटे होची स्थानीय दल पतितपान क्लब जे की पराजय वरण करछि अन्य जो माने विजय लाभ करछन से माने भंजनगर आसीथिले पान्ना ब्रदर्स क्लब तो निहाती रूपे स्थानीय लोकंकर टिके दबदबा रहिबो ही रहिबो से माने जो आशा करथिले जे तांको दल विजय लाभ करिवो खेल एते रोमांचक भरा थिला जे शेषरे पेनाल्टी गोल माध्यम मध्य कहा जाय पारे जहां एबे टेलीविजन स्क्रीन ने मध्य हमें बारी पारुछे आपन को धन्यवाद अधिक सूचना पाई आम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक सीधा सड़क आम सहित जोड़ी होते ए खबर उपर आमको अधिक सूचना दौले देश में मनरेगा बंचाओ आंदोलन आरंभ करिबो कांग्रेस आगामी सप्ताह देश में 45 दिवसीय मनरेगा बंचाओ आंदोलन आरंभ करिबो कांग्रेस सेही बळी विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को एठी कोर्ट रे चैलेंज करिवो बोली कांग्रेस शनिवार कहिछि ए अभियान समय रे गाँव आरंभ कर राज्य पर्यंत अनेक कार्यक्रम हाथ को नियाजिबा सहित देश में अलग अलग जाय भागरे 4टी बड़ सभा आयोजन मध्य कराजिबो ए संग्राम रो उद्देश्य देश में पुणी थरे महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी अधिनियम लागू करिबा एवं नुआ आईन को प्रत्याहार करिबा बोली कांग्रेस कहिछि ए अभियान जनवरी 10 रु आरंभ होई फेब्रुआरी 25 तारिख पर्यंत जारी रहिबो बोली पार्टी संगठन साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल कहिसंती कांग्रेस साधारण संपादक जयराम रमेश कहिसंती जे मनरेगा स्थान रे सरकार आनिथिबा नुआ योजना रे केवल विनाश भारत एवं योजना केन्द्रीयकरणर ग्यारंटी दिया जायछि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एने एक्स पोस्ट कहिसंती जे कांग्रेस रो 3टी दाबी अछि प्रथम दाबी हैला जी रामजी आईन को प्रत्याहार करा जाऊ मनरेगा को अधिकार आधारित आईन दे देश में लागू करा जाऊ एवं कामर अधिकार और पंचायतर अधिकार पुणी लागू हेउ एदिपाई आमे देशव्यापी मनरेगा बंचाओ आंदोलन आरंभ करिछु As Jairam rightly pointed out, there was a serious discussion, deliberation happened that day about the future course of action against this new law. The Congress Working Committee decided to launch a national-wide agitational campaign, Manrega Bachao Sangram, throughout the country. Basically, the design of the new law is very clear: to kill Manrega, which is one of the best demand-driven scheme of this country. नक्सल मुक्त भारत अभियान आगो को बढ़ुची आउ 14 माओवादी निपात 2टी एनकाउंटर रे 14 माओवादी मृत्यु घटी छत्तीसगढ़ बीजापुर एवं सुकमा रे एनकाउंटर होईछि सुकमा एनकाउंटर रे 12 जनक मृत्यु होईछि बीजापुर रे अन्य एक एनकाउंटर रे 2 माओवादी सफा होईछंती सुकमा रे गतकाली ठारू आरंभ होईतिला ऑपरेशन मिलित बाहिनी आरंभ करथिले ऑपरेशन एबे भी सुरक्षाकर्मी माओवादी गुली विनिमय जारी रहिछि घटनास्थल AK-47 इनसास बंदूक जबत होईछि मृतकंक मध्यरे कोंटा एरिया कमिटीर 3 सदस्य थिबा सूचना मिलिछि 3 जनक भितरे कोंटा एरिया कमिटी संपादक मांगड़ू अछि जिला सुकमा में कोस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत कोंटा एरिया कमेटी के 12 नक्सलियों को DRG के जवानों ने मार गिराया है। ये कल रात में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। लगभग 9 बजे मुठभेड़ चालू हुई, लगभग 1.5 घंटा ये मुठभेड़ चली।
प्राथमिक तौर पर लगभग 12 नक्सलियों के शव बरामद ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बरामद हुए हैं। इसमें कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगड़ू की भी मारे जाने की सूचना है। बहुत इंपॉर्टेंट था उस एरिया में जब भी जितनी बड़ी घटनाएं होती है, जैसे एडिशनल एसपी साहब आकाश राव गिरपुंजे साहब उनकी घटनाओं में भी शामिल था। उसके अलावा भेजी इंजरा मैक्सिस में अम्बुश हो गया, जैसे बहुत सारे घटनाओं में मंगड़ू शामिल था। 40 माओवादी आत्मसमर्पण मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर माओ संगठन शीर्ष नेता बारसे देवांकर समेत 40 जन तेलंगाना रे आत्मसमर्पण करिसेंती। माओवादी सबुठारु घातक बाटलेन PLGA नंबर 1 कमांडर बारसे देवा ओरफ सुक्का बारसे देवा एवं तांको सहयोगी माने इंद्रावती जातीय उद्यान अंचल छाड़ी तेलंगाना रे पहुंची तेलंगाना डीजीपी सम्मुख में आत्मसमर्पण करिसेंती। बारसे देवा छत्तीसगढ़ मोस्ट वांटेड नक्सल मानक मध्यरु जणे थिले। तांको मुंड उपरे 50 लाख टंकार पुरस्कार थिला। माडवी हिडमा घनिष्ठ सहयोगी थिला एवं तांको मृत्यु परे बाटलन नंबर 1 को कमांडो करथिले। हेले आत्मसमर्पण परे समस्तंकु सरकार को नियम अनुसार थैथान करा जिवो बोली डीजीपी कहिसंते। डॉक्टर अच्युत सामंत को JECRC विश्वविद्यालय 70तम सम्मान सूचक डॉक्टरेट। शिक्षाविद समाजसेवी तथा किट ओकिस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत को राजस्थान जयपुर JECRC विश्वविद्यालय सम्मान सूचक डॉक्टरेट प्रदान करा जायछि। JECRC विश्वविद्यालय नवम समावर्तन उत्सव अवसर में आज डॉक्टर अच्युत सामंत को यह सम्मान प्रदान करा जायछि। यह होछि डॉक्टर अच्युत सामंत 70तम सम्मान सूचक डॉक्टरेट। शिक्षा जरिया समाजर विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पाई डॉक्टर सामंत को यह सम्मान प्रदान करा जायछि। बहु विशिष्ट अतिथि और छात्र छात्री उपस्थित में JECRC विश्वविद्यालय चेयरपर्सन और OP अग्रवाल डॉक्टर सामंत को यह सम्मान प्रदान करथिले। JECRC फाउंडेशन होउछि एक 25 वर्षर पुराना शिक्षानुष्ठान। एथिरे 25,000 रु अधिक छात्र छात्री एबे अध्ययन करुछंती। JECRC विश्वविद्यालय नवम समावर्तन उत्सव अवसर में डॉक्टर अच्युत सामंत मुख्य अतिथि भाव में जोगदे छात्र छात्री को दीक्षांत अभिभाषण प्रदान करथिले। JECRC विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और परिचालना बोर्ड सम्मान सूचक डॉक्टरेट प्रदान पाई डॉक्टर अच्युत सामंत ना सुपारिश करथिले। सर्वसम्मतिक्रमे सम्मान सूचक डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करने को निष्पत्ति नहीं। यह सम्मान पाई डॉक्टर सामंत JECRC विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष को कृतज्ञता जणाइथिले। ता सहित कहिथिले विगत 3 दशंधि ऊर्ध्व समय धरी शिक्षा और समाजसेवा क्षेत्र में से निरंतर काम करि आसुछंती। यह सम्मान शिक्षा और समाजसेवा क्षेत्र में काम करने को आहुरी तांकु प्रेरणा जोगाइबो। Your presence inspires our graduating students. May this honor serve as a testament to your enduring legacy. परवर्ती खबर को आसिबा पाइखाना फ्लश रे टंका फिंगिदेले अभियुक्त। संबलपुर रो एक होटेल रे चलीथिला जुआ खेल। रूम नंबर 105 रे चलीथिला जुआ खेल। पुष्पनी अवसर रे जुआ खेल चलुथबा बेले रेड करिथिला धनुपाली पुलिस। पुलिस को देखि पाइखाना फ्लश रे टंका फिंगी देइथिले अभियुक्त। पाइखाना फ्लश रु लक्षाधिक टंका जबत होइछि। घटना रे 9 जन अभियुक्त अटक रखिछि पुलिस। एई जुआ खेल रे होटेल मालिकक संपृक्ति सीधासलख नथिले भी निश्चित रूपे रहितबा पुलिस कहिछि। अन्यपटे घटना विषय रे किछि जानि नाही बोली होटेल मालिक कहिसंते। धनुपाली आईसी आदित्य महाकुड एवं टीम उपहार पैलेस 105 नंबर रूम रे रेड करथिले एवं रेड कला परे कबाट ठक ठक कराला से पुलिस जानी जो टंका गुड़ाक से जो कमोड भितर पकई देते तो से बाहर कर जो टंका गुड़ाक अन्य जो टंका गुड़ाक टोटाल रूम भितर 9 जन थे 9 जन को डिटेन कराई टंका गुड़ाक बर्तमान काउंट कराई बर्तमान काउंट करूँ काउंट कला जना पड़े जहाँ जना पड़ी 8-10 लाख टका हम बोले जना पड़ी होटेल से आम भेरीफाई करूँ निश्चित भाव में जेहेतु एत टंकार चली खाइबा पीवा सब चली आसूची वेटर आसूची खाइबा देकी जाउची नेकी जाउची ऑर्डर नेकी जाउची तो निश्चित भाव से देखुथिबे भी से निश्चित भाव में जानत रे होतो एटा हम भेरीफाई करूँ माने मीटिंग करमु आ खाइमु बोली कहले बोले दिया हितला अंता घंटे 1.5 घंटा हला न खिया पिया ही करूथिले कथावार्ता लागुथिले अंता हिजे बोली कि हमें जानी ही नहीं जस्ट अंता हला बोली कि
इटा आपण माने चंदा जानले बोली कि हमें बिल्कुल जानी ही नहीं से माने हमें ऐसे कहीं दे जू 30% मार्जिन रे आपण ता खेलो किछि ना हमें तो जानी भी नहीं है क्या गाड़ी माने निजे कहउछन जे मालिक जेन 30% किछि ना हमें जानी भी नहीं जानले हमें रूम कहीं देतु आगे हमर सब बदनामी होबा हमें जबे दुदीटा कि आइटम बढ़ौ जन आ धीरे धीरे लोग आसुतले एका संगे आसी नहीं से माने कोई दिबे मिछ कथा किंतु हमें एतो रूम तो दऊ ही नहीं अंता लोग आपण विषय किछि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जानी आगे जानी दिले हमें दऊ ही नहीं हमें जबे सब दऊ नहीं थालापति विजय शेष फिल्म जननायक को नेकी जननायकन को नेकी फैंस को भितर ढेर उत्साह देखा मिली हिंदी तमिल और तेलुगु भाषा रिलीज होगा फिल्म आज ट्रेलर लॉन्च हुई संध्या 6:45 ट्रेलर रिलीज होता बेले फैन माने एठी उत्सव पाली विजय पोस्टर रे आरती करी शुभकामना जणाई फैन माने मदुराई फैन माने ट्रेलर रिलीज अवसर में उत्सव पाड़ुवा देखा मिलता प्राय 2 मिनिट 52 सेकेंड ट्रेलर रे विजय दमदार डायलॉग और एक्शन देखा मिलूँ राजनीति और आसन लड़ई को ट्रेलर रे देखा जाइथिबा बेले हजार हजार लोक ट्रेलर देखि सारी फिल्म रे विजय पुलिस भूमिका थिबा बेले विलियन रोल ले अछंती बॉबी देओल आसंता 9 तारिख रे फिल्म रिलीज हेबार कार्यक्रम अछि। न्यूजीलैंड विपक्ष दिनिका सीरीज भारतीय दल घोषणा शुभमन गिल नेतृत्व में पड़िया को ओह्लैब टीम इंडिया दल को फेरिले उप अधिनायक श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज ते बीसीसीआई डाक्तरी टीम तरफ फिटनेस क्लीयरेंस पाइबा पर ही अय्यर खेली पारिबे। विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत स्थान बजाय रखिंट ईशान किसान को सुजोग दिनिकिया सुजोग मिलना टीम रे यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर भाव में सामिल करा जायछि। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में शुभमन गिल अनुपस्थित में रोहित शर्मा सहित जायसवाल ओपनिंग करते से द्रुत बोलर मोहम्मद सिराज दल को फेरिले सहित हरदीप सिंह प्रसिद्ध कृष्ण और हर्षित राणा को टीम में स्थान मिली। वर्कलोड पर द्रुत बोलर जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को विश्राम दि जाएगी। पुणी निराश होती पेसर मोहम्मद शामी 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया सीरीज प्रथम मैच जनवरी 11 में बड़ोदरा खेल। समय सरुचि भारत 10 को ये रखा। नमस्कार।